Hello everyone, welcome to Aptly Place Academy for Civil Services. This is a special video on monthly policy review which is being released by PRS Legislative Research, and I'll be discussing all the details that was reported in this month, and this is for the month of June. PRS monthly policy review is among one of our initiative in the monthly initiative. So let's understand what are the important news that were reported in the entire June that is relevant both for the prelims and mains examination. Before I proceed, just to tell you about the PRS Legislative Research, this is an independent research initiative which started in 2005, right? So they assist MP and MLAs, and you can read more about this in their homepage. They're situated at Delhi. I will start before I start, just to tell you, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Place Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video helpful, do not forget to give a thumbs up. Starting our session with the first topic that is there in this PRS Legislative Research compilation. So in this report, we'll first discuss the Niti Aayog roadmap for the ethanol blending, right? So this is being in collaboration with Niti Aayog and Ministry of Petroleum and Natural Gases. So these type of initiative is very relevant for the prelims examination. They can ask you the parent organization and the partner organization. So what are the details coming from this news? We'll understand this. So the Niti Aayog has released a report that is named as Roadmap for the Ethanol Blending, and the timeline that they have provided is 2020 to 2025, right? So what does the report suggest? So the report called for an annual roadmap for the productions and supply of ethanol till 2025 to 2026, and also to have a system for the countrywide marketing in the ethanol. So जो मेन एम है इसमें कि किस तरह से इथेनॉल की जो मार्केटिंग है दैट हैज टू इंक्रीज एंड सस्टेनेबली वी हैव टू यूज दिस energy, right? So blending has to be used in such a manner that it help the environment and also for the enterprises and the industries. Now some observation and recommendations by the committee, एक report जो release की गई है, they call for the requirement for the ethanol petrol blending that will increase from 173 crores to 1116 liter by 2025 to 2026, right? So you can see this is a drastic increase that we can project at this point of time, and this is a preparationary phase that government of India is doing. So to meet the demand, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करनी होगी from 684 liters to 1500 crore liters. So everything that is in crore liters, I'm not quoting this specifically. So the target set is 2025 to 2026. The more recommendation that was given is to enable rollout across India. जो इथेनॉल की सप्लाई है या फिर बात करें from supply to surplus to deficit state based on their requirement. We have many states. कुछ states के पास deficit है, कुछ states के पास surplus है. So Niti Aayog in collaboration with Ministry of Petroleum, they are trying to make a balance between them, right? And this would ensure कि जो uniform availability of ethanol blends है वो पूरे country में बनी रहे. The ratio and the availability should be equally balanced as per the demand and the population of the states. Now, how ethanol blending roadmap would work? What is the guideline? What is the recommendations from the Ministry of Petroleum and Natural Resources? They said that they would notify a plan जहाँ पे अगर availability की बात की जाए. So there's E10 fuel. What is this E10? E10 stand for 10% of blend and 90% of petrol, right? By 2022, government has said that they would be using a variant of ethanol blending that is on E10. Now gradually will move to E20 as well. So ministry ने कहा है will notify a plan to continue the availability of this, and further after कुछ 2022 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2023 से पहले E20 वेरिएंट यूज की जाएगी. In E20 there would be 20% blend and 80% of petrol, right? So these availability would be ensured by 2025 and it will gradually start in phase manner from 2023. Now, expediting regulatory clearances की अगर बात करें, see clearances is something which is very important, and ethanol production plant need environment clearance. जो EC है, खास करके Ministry of Environment, Forest and Climate Change की तरफ से दी जाती है. There are other regulatory body also involved that call for an expansion of the project, and
For this expansion, environmental clearance is must in India, right? We have some stringent rule with regards to the environmental clearances. फर्दर अगर बात करें, रिपोर्ट रिकमेंड करती है सिंगल विंडो सिस्टम की. द सिंगल विंडो सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस इन एवरी सेक्टर्स. स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट एफडीए ऑल्सो, वहाँ पे भी सिंगल विंडो सिस्टम की गई है, ताकि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड है, इन्होंने कहा था कि इस तरह के फॉर्मुलेशन से रेड टेपिज्म को खत्म किया जा सकता है एंड क्लियरेंस कैन बी गिवन एट द अर्लीस्ट. ऑल्सो जो वर्क है, definitely if the work is being done, industry is being established, ultimately they are contributing to the economy only. Now the other news, that is India digital ecosystem for agriculture. This was a topic that trended on that particular month. So need to understand what is India digital ecosystem for the agriculture. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्म वेलफेयर ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है अबाउट इंडिया एग्रीकल्चर डिजिटल इकोसिस्टम ऑन एग्रीकल्चर, हाउ द डिजिटलाइजेशन कैन हेल्प एग्रीकल्चर. और आपको पता होगा कि एवरी सेक्टर इज गेटिंग सम डिजिटलाइजेशन, राइट? ड्यूरिंग द एरा इन 21st century, ministry already has made it some of the upgradations on their part of e-governance, but specifically talking about agriculture sector, digitalization is must. So the paper is a representation of the efforts जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई है for the agriculture sectors and focusing on farm income, right? We have to increase the farm income, double the farm income, and this can only be possible, one, with the government programs and policy, and second, with the use of technology, right? फीचर्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इस कंसल्टेशन पेपर में इंक्लूडेड है. सो फर्स्ट आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? So to increase the farm income and profitability, there is need to access of right information, and right information can be in many multiple terms, right? चाहे वो मार्केट प्लेस में उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करनी हो या फिर फार्म्स प्रैक्टिसेस से लेकर के, और सो राइट इन्फॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल, राइट? सेकेंड, providing personalized system across the agriculture life cycle. This is the second most important objective. Third is to build a digital agriculture and precision agriculture capacities. So these are the three and four most important objective that was reflecting in the consultation paper. Now some core feature, अगर idea core की बात करें, so this idea core includes some of the important 4 point, that is unique farm ID for validations. There would be a unique ID for each every farmers, like Aadhaar we have, like unified farmer services interface to handle the services and transaction that suit for agriculture spaces. आइडिया की एक अपनी आर्किटेक्चर डिपोजिटरी होगी जो सिंगल पॉइंट रेफरेंस सारे कोड के लिए एक्ट करेगी. देयर वुड बी दिस वुड बी सपोर्टेड बाय किसान कॉल सेंटर्स, जो ई नाम है उसको सपोर्ट करेगी, और जो जीआईस है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम्स है या फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, उनके साथ इम्पैनल्ड होगी, कोलैबोरेटेड होगी, सो दैट इट कैन प्रोवाइड बेस्ट एंड authentic informations. Now how this framework would be implemented, अगर idea की बात करें, this would be implemented through National Mission on Digital Agriculture, और ये supported है, it would be supported by the advisory council consisting of various stakeholders. So still government has not disclosed the implementation part, but very soon once this draft is final, the all comments that is coming from the experts, then government would release and the data about the stakeholders that would be participating in this digital agriculture mission. Now some milestone, if you talk about the major milestone for 3-year action plan, these include development of core features, development of privacy, consent management and data sharing, establishing a dedicated institution for setting idea, और ये पूरी एम है विद बिल्डिंग अ नेशनल एग्री स्टैक्स, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन ऑफ फार्म वेलफेयर, इवन आईटी कंपनीज, जितने भी एफपीओज होंगे, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर जो रिसर्च बॉडीज हैं, उनको हर एक सिनेरियो में फार्मर्स के डेटाबेस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, सो दैट दे कैन हेल्प फार्मर इन बिल्डिंग मोर एंड मोर क्रॉप, एंड एट द सेम टाइम दे हेल्प द फार्मर्स टू डबल देयर इनकम. Other news or other topic, that is Model Tenancy Act approved by the cabinet. What is this Tenancy Act? So those of many of the people in India basically rent out the home. So this is important to understand what exactly the rule and law in India is. So the cabinet has approved the Model Tenancy Act 2021, जो adopt की जाएगी सारे states के द्वारा, and it would be adopted even by the union territory
governments. So this seeks to regulate the rental properties. इंडिया में जितनी भी रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिकली जो प्रोटेक्शंस दी जाएगी टेनेंट्स को, उनके राइट्स को, लैंडलॉर्ड के राइट्स को, और एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश की जाएगी वेयर देयर वुड बी अ डिस्प्यूट रेड्रेसल mechanism. So this is a comprehensive program where everything like the tenancy of an individual, of the tenants and the landlords would be regulated. Now since renting housing is regulated by the state government, ये जो Model Tenancy Act है ये एक framework बताएगी where suitable changes can be also recommended by the state and the union territories. क्या क्या की important features हैं अगर Tenancy Act की बात करें? So the Model Act states कि जो written agreement होती है, before if any of you have a rent agreement, if you're residing out of your home और आप rent में घर में रह रहे हैं, तो there is a agreement, there's a notary paper, there's a court paper, right? So you have to go by an agreement where the tenant promises to pay a rent, and each basically agreement get renewed after 11 months, right? So this is a policy depending upon which state you are living, right? I'm basically talking about the states like Delhi, Mumbai and Calcutta. So the agreement must specify the details of the amount, कितने रेंट पे करनी है, ये सारी टेनेंसी एग्रीमेंट में होनी जरूरी है as per the new law. So first is rent payable, कितने रेंट आपने पे करनी है, that you have to mention. The security deposit, because in many places you have to deposit 1 month rent in advance plus 1 month security, right? And after that you can continue for every month rent. So this is how things work in metropolitan cities. And the condition of maintenance, if there is any lift, there are any parking facilities which were provided in security card, everything has to be mentioned, each and everything has to be mentioned in detail in the tenancy agreements. Now the rental agreement की बात करें, this must be registered with the rent authority within 2 months of the date of agreement, right? Within 2 months अगर आपने रेंट किया है तो उसके अंदर अंदर आपको रेंट एग्रीमेंट क्लियर कर लेना है. Now there's a dispute adjudication body, so there's a dispute redressal mechanism which is there. So the Model Act proposes 3-tier mechanism, जहाँ पे 3 level बनाई गई है. First is rent authority, दूसरा है rent court, and third is rent tribunal. So each authority has defined their work, and according to the hierarchy, the cases would be escalated to the upper authorities. So rent authorities की अगर बात करें and rent court की, they would be appointed by the district collector, जो कि district magistrate भी आप बोल सकते हो, deputy commissioner भी कई जगह बोले जाता है. So they would be after approval of the state government. And state government की अगर बात करें, the state government may established rent tribunal, वो कर सकते हैं in each district after consultation with the jurisdiction of high court. But इन तीनों में कोई सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है. नो सिविल कोर्ट विल हैव अ जुरिसडिक्शन ओवर द मैटर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ टेनेंसी एक्ट. Very important point for your prelims. If this is being question asked, UPSC will definitely ask you this statement. So make sure you are thorough with the concepts. Now eviction की अगर बात करें, किस केस में एक टेनेंट अपने जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट्स को हटा सकता है, उसकी एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है. सो टू evict a tenant, a landlord must have to seek to the rent authority seeking the evictions, अगर उसको टाइम से पहले हटाने. So the authority will make an order for the eviction on the grounds that include refusal or failure of payment of rent. अगर आपने रेंट टाइम पे पे नहीं किया है या आपकी रेंट पेंडिंग है on that particular case, this is one criteria. Second is a part of possessions. अगर आपने किसी एरिया को possessions लिया है without the consent of landlord, that is because you are renting, so it is his property, not yours. And structural changes in the written consents. So right, these for this eviction can be done. Now subletting की अगर बात करें, this can be again further increased, और अगर उसको leasing करनी है, so the model prohibits subletting unless allowed through the supplementary agreements. So when there is a main agreement, it can be followed by a supplementary agreements, right? And the landlord tenant must jointly inform the rent authority within 2 months of the date of agreement for the subtenancy. अगर किसी तरह की subtenancy होती है तो उसके लिए आगे authorities को inform करनी होगी, right? So this is all about the details that is coming from the Model Tenancy Act. Now the Draft Immigration Bill 2021, again something which is very important. So the Ministry of External Affairs has released a draft bill. इस draft bill में कुछ regulatory mechanism की बात की गई है to govern the overseas employment of Indian nationals, और इसमें protect की जाएगी, promote की जाएगी for the welfare of Indian immigrations. Right? So the draft bill define किस तरह से जो immigration of Indian citizen है, जो who seeks have departed from India for the employment.
those basically a lot of people move to Canada, United States, Britain, and other countries for the employment. So these big seals जो इमिग्रेशन बिल है वो हेल्प करेगी उन लोगों को जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर है. What are the features? First is authorities. बिल ने कहा है कि 2 authorities होनी चाहिए. First is Bureau of Immigration Policies and Planning, जिसको BEPP कहेंगे, and the other is Bureau of Immigration Administration, BEA. So these two names are very important. Possibly this question can be there in your prelims. Right now, let's understand each bureau, that each 2 authorities, what would be their work. So first is BEPP. इसके जो काम होंगे उसके काम होंगे प्रिपरेशन पॉलिसीज मैटर रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ इमिग्रेशंस, नेगोशिएट करना लेबल जो लेबर्स हैं उनके साथ, सोशल सिक्योरिटी के एग्रीमेंट्स हों with destination countries. So these body would be interested to do some work and they have the responsibility towards the people who are employed in the foreign countries. Now BEA की बात करें, जो अथॉरिटीज होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, दे वुड मेंटेन द डेटाबेस ऑफ इंडियन एंड जो जितने भी इमिग्रेंट्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं उनके लिए, और इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इमिग्रेंट्स. So this is a welcome gestures coming from Government of India to help all the immigrants that are moving from India to the outside. ड्राफ्ट बिल में कुछ इंपॉर्टेंट नोडल कमिटीज की बात की गई है. उनके फंक्शंस होंगे इनिशिएटिंग एक्शन टू प्रोसिक्यूट एंटिटीज इन्वॉल्विंग ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, अंडरटेकिंग प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी, और प्रोस्पेक्ट इमिग्रेशन को किस तरह से उसके एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम दिए जा सके थ्रू स्किलिंग. सो दीज ऑल आर ऑल्सो द प्रोविजंस दैट इज देयर अंडर द ड्राफ्ट बिल. ह्यूमन रिसोर्स एजेंसीज की बात की गई है. सो दीज एजेंसी वुड रिक्रूट द एम्प्लॉयर्स. जिस तरह से in human resources, basically in HR, there every department in the government of India and even in the private sector, the HR department is there that take care of the betterment of the employees, and these agency must be registered with the competent authorities. Now accreditations की अगर बात करें, so हर एक एम्प्लॉय को ये इंटेंट होगी कि दैट रिक्रूट द इमिग्रेशन मस्ट बी अप्लाइंग फॉर एक्रेडिशन. जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी वो एक्रेडिशन प्रोवाइड करेगी, वैलिडिटी प्रोवाइड करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, आफ्टर विच दिस वुड बी सब्जेक्ट टू रिन्यूअल. राइट, सो रिन्यूअल के बाद फिर इसको बाद अप्रूव कर सकते हैं. नाउ रिवाइज्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर एम्फोट्रोसिन बी एंड रेमडेसिविर. राइट, सो देखते हैं डिटेल्स क्या है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने रिवाइज किया है एक्सपोर्ट पॉलिसी 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स के लिए. फर्स्ट इज एम्फोट्रोसिन बी एंड रेमडेसिविर. राइट, ये दोनों ड्रग ऐसे हैं जो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, और इनके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, API बोलते हैं इसको, जो API है उनके लेगों को रेगुलेट करेंगे. API इज बेसिकली प्राइमरी इंग्रेडिएंट होते हैं, एक फार्मूला होता है जो कि ड्रग्स में यूज की जाती है. Now talking about amphotericin, अगर amphotericin की अगर बात करें, this injection has been restricted, only permitted under the license. जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है इनकी अप्रूवल चाहिए होती है अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं. And for remdesivir and its API, Ministry has improved the prohibition import on export in April. Right, Ministry ने इसके export के लिए ban हटा दी है. So this export have now been permitted in the restricted manners. Now, other news, that is consumer protections. That was a short news basically regarding the amphotericin. Now, consumer protections, e-commerce. I have already discussed the consumer protections rule before also, but I'm giving you some other details that would be relevant for the examinations. Department of Consumer ने release किया है इसको, और the rule call for the notifications of the Consumer Protection Act 2019. Rule apply होगी goods and services transaction on electronic networks. Now what the key changes that has been promoted? E-commerce entity की बात की गई है. So e-commerce entity is a person who owns, operate and manage the electronic facility on the platform of e-commerce. Right? और ड्राफ्ट रूल में स्पेसिफिकली एंटिटी की बात की गई है. वैसे पर्सन होंगे जो एनी एंटिटी इंगेज्ड इन सच फुलफिलमेंट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, जिस तरह से आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट यूज करते हो, एंड एनी रिलेटेड पार्टी डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट. सो if you're doing a business, you have to register yourself under the Company Act 2013. Restrictions बताई गई है मार्केट प्लेस को लेकर के. So market place and e-commerce, market place has only been approved with the FDI policy, right? जो vendors हैं, inventories है, model है, वो इसमें applicable नहीं है. So the marketplace e-commerce is an entry that offers technology platform, facilitate transactions between buyers and sellers. Right?
ड्राफ्ट रूल की अगर बात करें, दैट रिक्वायर मार्केट प्लेस एंटिटीज टू इंश्योर कि हर एक इंडिविजुअल दैट दे डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू प्लेटफॉर्म, किसी भी अनफेयर एडवांटेजेस के लिए उनको गलत इंफॉर्मेशन ना दी जाए. None of the related parties and enterprises are selling for the consumer directly, right? And there are more other expiry and other things that has to be mentioned, and these restrictions are only to ensure कि जो individual customers हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा benefits हो. And nothing is done related to parties or associated enterprise when e-commerce entity cannot do it itself. नाउ फॉल बैक लाइबिलिटी की अगर बात करें, सो ड्राफ्ट रूल में एक मार्केट प्लेस में ये कहा गया है कि फॉल बैक लाइबिलिटी होगी. और फॉल बैक लाइबिलिटी की अगर बात करें, लाइबिलिटी होती है वेयर सेलर रजिस्टर विद फेल्स टू डिलीवर इन अ फेज्ड मैनर, तो उसके जो लॉसेस होते हैं वो कंज्यूमर पे एप्लीकेबल नहीं होंगे. द कंपनी वुड बी लाइबल टू पे द एंटायर अमाउंट, राइट. एंड इवन जो कैंसलेशन फी है उसको भी वेव ऑफ करने की बात की गई है. कोई भी कंपनी कैंसलेशन को लेकर के कोई चार्ज नहीं करेगी. सेलिंग प्रैक्टिसेस की अगर बात करें, सो द ड्राफ्ट रूल प्रोहिबिट ई कॉमर्स, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड फ्लैश सेल्स इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोई फ्रॉडलेंट इंटरसेप्शंस ना हो. इससे बचने के लिए कोई भी फ्रॉड गिमिक एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने की बात की गई है. एंड फ्लैश सेल हैज़ बिन डिफाइंड एज अ सेल ऑफ significant reduced prices to attract the offer in permitted or limited period. They can offer limited period prices, but that also should not be gimmick, and that should be actually providing the sufficient sell that is required by the customers. So this was all our initiatives, right? We have a lot more initiative that you can reach out through Daily News and Editorial Analysis, IS Gadgeted Magazine, Fortnite Current Affairs, where we've already discussed PIB and Kurukshetra Yojana, right? So check our all initiative in the YouTube playlist section. That will help you in the journey of civil services. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening. And we have all India test series that you can avail at the affordable price, right? So do check it out. Thank you so much.